भारत से 7 समुंदर पार अमेरिका और अमेरिकी लोग ये जान चुके हैं कि खुशियों का त्योहार दिवाली पर्व है बुराई पर अच्छाई का। ये पर्व है अज्ञानता पर ज्ञान का और ये पर्व है अंधेरे पर रोशनी की जीत का। पहली बार शक्तिशाली देश अमेरिका के व्हाइट हाउस में हिंदुओं के संग अमेरिकियों ने दिवाली का ग्रैंड सेलिब्रेशन किया। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब व्हाइट हाउस की तरफ से ग्रैंड लेवल पर दिवाली मनाई गई। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से राष्ट्रपति के निवास स्थान पर उनके कार्यस्थल पर दिवाली मनाने की परंपरा अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने शुरू की, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में भारतीयों की अच्छी खासी तादाद है। इसीलिए बाकायदा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और दिवाली के इस कार्यक्रम को शानदार बनाने का काम भारतवंशी अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने किया। पहली बार दीपों की रोशनी से जगमगाए व्हाइट हाउस में भारतीय संस्कृति की झलक नजर आई। बच्चों की तरफ से डांस परफॉर्मेंस दिया गया। दिवाली के इस रौनक में हर कोई डूबा हुआ नजर आया। 200 से ऊपर भारतीय अमेरिकी की मौजूदगी में अमेरिका की फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति दोनों ने ही फुलझड़ी जलाकर दिवाली मनाई। जो बाइडेन बाकायदा उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए दिखे जो इस अवसर पर अमेरिकी संस्कृति का हिस्सा बने। इस खास मौके पर जो बाइडेन ने कहा, ये व्हाइट हाउस में अब तक का सबसे बड़ा दिवाली रिसेप्शन है। अब तक के इतिहास में हमारे प्रशासन में सबसे ज्यादा एशियाई अमेरिकी हैं और हम दिवाली को अमेरिका के कल्चर का खुशनुमा हिस्सा बनाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। As your president and first lady and as vice president, we are honored to host you as this is the first Diwali reception of this scale in this house ever to be held. We have more Asian Americans than ever before in history, and we also wanted to send this message to all of you here and to millions of fellow Americans across the country who observe this sacred holiday. It's a simple message. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you for making this celebration of Diwali such a joyous part of American culture as we see it across the country, opening homes and hearts and exchange gifts and sweets and hosting feasts and for family and friends, organizing cultural programs that bring us together as a people. इस बार की दिवाली को लेकर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस कितनी एक्साइटेड थी, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से दिवाली सेलिब्रेशन से जुड़ा एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसमें अमेरिकी साड़ी, लहंगा और शेरवानी पहने नाचते गाते दिखे, दिए जलाते हुए दिखे, फुलझड़ियां जलाते हुए नजर आए। यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे अमेरिकियों ने भारतीय व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। You know, the White House is the people's house. And together, these two, our President and First Lady, have once again made this place a place where every American can celebrate and honor their traditions. And we know and understand the significance of that. And we have learned we cannot take that for granted. And so to the two of you, I thank you deeply for all that you are. And it is so good to be with everyone here. Tonight, of course, we join with more than 1 billion people around the world to light the Daya and to celebrate the fight for good over evil, knowledge over ignorance, and light over darkness. I have personally such fond memories of celebrating Diwali as a child. दियों की रोशनी से नहाए व्हाइट हाउस में दिवाली की रौनक देखने लायक थी। इस बार अमेरिका का कोना कोना दियों की रोशनी से जगमगाया हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस जगमगाहट के पीछे न सिर्फ दिवाली का पर्व है बल्कि अमेरिका का हिंदू इतिहास भी है। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, ये एक शोध का विषय है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज अमेरिका की जिस धरती पर हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी बसती है, उसी धरती की जड़ें सनातन धर्म से मिलती है। अमेरिकन इतिहासकार ये मानते हैं, भारतीय आर्यों ने ही अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाई थी। अमेरिका के रेड इंडियन वहां के आदि निवासी माने जाते हैं और हिंदू संस्कृति वहां पर आज से हजारों साल पहले पहुंच गई थी।
माना जाता है कि ये बसावट महाभारत काल में हुई थी। अमेरिकन महाद्वीप के बोलिविया, जो आज का पेरू और चिली है, वहां कभी हिंदुओं ने प्राचीन काल में अपनी बस्तियां बनाई और कृषि का भी विकास किया। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग आदि सब कुछ हिंदू धर्म समान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक सेना ने नेटिव अमेरिकन की एक 45वीं मिलिट्री इन्फेंट्री डिवीजन का चिन्ह एक पीले रंग का स्वास्तिक था। नाजियों की घटना के बाद इसे हटाकर उन्होंने गरुड़ का चिन्ह अपनाया। आज हालात ऐसे हैं कि अमेरिकी लोगों का हिंदू धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। इंसान को कुदरत से जोड़ने वाले इस धर्म के प्रति अमेरिका का झुकाव बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं के तीज त्योहार अमेरिकी धरती पर सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। लोग सनातन धर्म का पालन कर खुद को आध्यात्म से जोड़ रहे हैं। ऊपर से विश्व पटल पर हिंदू बहुल हिंदुस्तान का बढ़ता कद, विदेश धरती पर हिंदुओं का डंका, पीएम मोदी की बढ़ती ताकत, उस ताकत के बल पर विदेशी धरती पर हिंदू धर्म का परचम लहराना और ऊपर से भारत के प्राचीन हिंदू मंदिरों की बदलती तस्वीर, इन्हीं कारणों के चलते आज अमेरिका तक को दिवाली का ग्रैंड सेलिब्रेशन करना पड़ रहा है। Like many of you, we would go to India about every other year, avoiding monsoon season. And we would go for Diwali. And I have such fond memories of waking up in the middle of the night, me and my sister Maya, and going, of course, to the eldest in our family, which was our grandfather. And then later in the day, my mother would give us lit sparklers, and we would go into the streets to celebrate this very important occasion. As many of you know, my mother arrived in the United States at the age of 19 when she came to the United States to study. She arrived by herself, but it was her goal and her mission to study to become a breast cancer researcher. And in our country, in this country, she built a life. She earned her PhD, and she excelled in her field. And she raised my sister and me. And it is because of her dedication, her determination, and her courage that I stand before you as Vice President of the United States. So as we all know, Diwali is a holiday of hope. As with so many cultures, Diwali reminds us to see the light in our world, in each other, and in ourselves. We also are reminded to shine our light in the darkness, to fight for peace, for justice, for understanding, even as powerful forces work to sow hate and division. We remember that in these moments where we see darkness, our light shines the brightest. That is part of what we are reminded of in Diwali. In moments of darkness, we see the light. So today, as we celebrate Diwali, let us continue to make real the ideals of our nation, the ideals of freedom, democracy, and equality for all. Together, let us, all together, light the way toward a better future.